number 5, coal and petroleum. In this chapter, we will learn about natural resources, coal, product of coal, petroleum and natural gas. So first one, natural resources. In our everyday life, we use a large number of material for our basic need. Some of these materials are found in nature, whereas others are man-made. Air, water, soil, sunlight, coal, petroleum, natural gas and minerals are obtained from nature. It means materials are obtained from nature, so they are called natural resources. On the other hand, plastic, synthetic fiber, paint and other products are all man-made materials. Next one, types of natural resources. All the natural resources can be classified into two categories. First category, inexhaustible natural resources, and second one, exhaustible natural resources. So first one I will explain here, inexhaustible natural resources. Inexhaustible natural resources, in term, inexhaustible mean something which cannot be used up completely. यानी कि जिसको आप पूरी तरीके से क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते. These natural resources which are present in unlimited quantity in nature and not likely to be exhausted by human activity are called inexhaustible natural resources. Examples are inexhaustible natural resources are sunlight, air, water, etc. These are inexhaustible natural resources. Second category, exhaustible natural resources. Exhaustible natural resources, in this term, exhaustible mean something which can be used up completely. यानी कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, जितना वो नेचर में प्रेजेंट है, क्योंकि आपके जो exhaustible natural resources होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक, तो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और अगर उसको क्या करेंगे, लिमिट से ज्यादा या फिर उसका प्रॉपर यूज नहीं करेंगे, उसका फालतू यूज अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड है तो वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. इट मींस resources which are present are limited quantity in nature and can be exhausted by the human activities are called exhaustible natural resources. The example exhaustible natural resources are coal, petroleum, natural gas, minerals, etc. In this chapter, we will study some exhaustible sources of energy like coal, petroleum and natural gas. Coal, petroleum and natural gas are also called non-renewable sources of energy. This is because when all the coal, petroleum and natural gas present under the earth will get used up, no more supply of those fuels will be available in the near future. So before we go further, we should know the meaning of the term fossil fuel. Fossil fuel means the natural fuel formed from the remains of living organisms buried under the earth long ago are called fossil fuel. Coal, petroleum and natural gas are fossil fuel. So first one, coal. Coal is a hard black combustible mineral that consists mainly of carbon. कोल जो होता है वो हार्ड ब्लैक कलर का होता है, साथ ही साथ कंबस्टिबल मतलब ज्वलनशील, यानी कि जो जलते हैं, और मेनली जो बना होता है वो कार्बन से बना हुआ होता है. कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर कंट्री, और जो कोल है वो हमारी कंट्री में क्या है, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है. नेक्स्ट, हाउ कोल वाज फॉर्म. About 300 million years ago, Earth had dense forests in low-lying wetland areas. Due to natural processes like earthquake, volcanic eruption, and flood, etc., these forests were buried under the surface of Earth as more soil deposited over them. They were compressed. The temperature also rise as they sank deeper and deeper due to high pressure and high temperature inside the Earth. यानी कि जैसे उनके ऊपर और भी चीजें क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, वहां पर जो वो क्या है, फॉरेस्ट है या प्लांट है, एनिमल है, वो और भी ज्यादा क्या होते जाएंगे, अर्थ के नीचे चले जाते जाएंगे, और साथ ही साथ वहां पर टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा. ठीक, और साथ ही साथ एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर की एब्सेंस में वो जो मटेरियल है वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, कोल में कन्वर्ट होता जाएगा. और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, एंड इन दिस स्लो प्रोसेस which the dead plants
Next one, product of coal. Coke, coal tar and coal gas. These are product of coal. When coal is heated strongly, is closed, rethawed. In the absence of air, a number of useful products are obtained. The various useful products obtained by processing of coal by heating in the absence of air. तो जब कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में बहुत ही ज्यादा हीट किया जाता है तब क्या बनते हैं प्रोडक्ट ऑफ कोल एंड दीज आर प्रोडक्ट ऑफ कोल. Coke, coal tar, coal gas are called product of coal. These products are obtained when coal is heated in absence of air. This is because if coal is heated in the presence of air, then coal is burned and produce carbon dioxide gas and lot of heat energy. Okay. So first product, coal. Coal is a tough and porous black substance. Coke is almost pure form of carbon. जो coke है वो कार्बन की almost pure form है because it is 98% of carbon. क्योंकि इसमें क्या है 98% कार्बन है और इसको क्या किया जाता है as a reducing agent के तौर पर यूज किया जाता है जब मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है like zinc and iron. And coke is used to manufacture of steel used as a fuel. Second one, coal tar. Coal tar is a thick black liquid having unpleasant smell which obtained of heating of coal in absence of air. कोल तार में क्या है आपकी एब्सेंस ऑफ एयर में यानी कि जब कोल को क्या किया जाएगा एब्सेंस ऑफ एयर में हीट अप किया जाएगा तो क्या मिलता है आपका कोल तार मिलता है जो कि काफी थिक मतलब गाढ़ा होता है ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जिसकी स्मेल जो होती है वो काफी क्या होती है अनप्लीजेंट मतलब काफी बदबूदार स्मेल इसकी होती है. ठीक. और पर्टिकुलरली ये जो मिक्सचर होता है कोल तार जो है कम से कम 200 सब्सटेंस का क्या है मिक्सचर है. और पर्टिकुलरली अगर हम कोल तार की बात करें तो कोल तार को जो यूज किया जाता है वो स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंस लाइक synthetic drug, synthetic dyes, drugs, explosive, perfume, plastic, paint, and interestingly, naphthalene ball. Naphthalene balls to use to repel moth and other insects also obtained from coal tar. And coal tar has been traditionally used metallic of the road. These days, however, bitumen, a petroleum product, is being used to increasingly for the metallic of road surface. कोल तार को क्या किया जाता है ट्रेडिशनली अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो तब से क्या किया जाता है पक्की सड़क बनाने के लिए यूज किया जाता है. लेकिन आज के टाइम में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको बिटुमेन कहा जाता है उसने इसको क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया है. थर्ड वन, कोल गैस. कोल गैस इज अ गैसियस फ्यूल. ये गैसियस फ्यूल है. ओके. एंड ऑब्टेन्ड बाय द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ द कोल एब्सेंस ऑफ एयर. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो कोल को जब एब्सेंस ऑफ एयर में एयर के एब्सेंस में क्या किया जाता है हीट अप किया जाता है तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं. एंड कोल गैस मेनली मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन विद सम कार्बन मोनोऑक्साइड. व्हेन कोल गैस बर्न इट प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ लाइट एंड कोल गैस वाज यूज्ड फॉर street light but nowadays it is used source of heat rather than light. Next, fossil fuel, petroleum. Petroleum is a dark colored thick crude oil. Crude oil मतलब होता है कच्चा तेल. Found below the ground of certain area, it has unpleasant odor. The name petroleum means rock oil. इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो पेट्रोलियम है वो पेट्रा और ओलियम से मिलकर के बना है. एंड पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स oil. So it is called petroleum. It is a complex mixture of compound known as hydrocarbons. Hydrocarbons means वो compound जो एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए होते हैं. And petroleum is insoluble in water and it is also called fossil fuel, crude and mineral oil. Petroleum oil was formed the decomposition of remain tiny plants and animals buried under the sea. And last fossil fuel is natural gas. Natural gas consists mainly of methane with small quantity of ethane and propane. When natural gas is compressed by applying pressure, it is called compressed natural gas. It means CNG. यानी कि हमारी जो नेचुरल गैस है जब उसको क्या किया जाता है प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस किया जाता है फिर उसे क्या कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है.
is called clean fuel. नेचुरल गैस जो है आपकी जो सीएनजी है वो क्लीन फ्यूल है. रीजन इसका ये है क्योंकि जब ये बर्न होती है तो ये कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती है एंड डज नॉट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, और ये एयर पोल्यूशन का कोई कारण भी नहीं है. एंड इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ नेचुरल गैस. Used as domestic and industrial fuel, used as fuel in thermal power station for generate electricity. Natural gas is used as source of hydrogen gas needed to manufacture fertilizer. Some natural resources are limited. The amount of coal and petroleum and natural gas present in the earth is limited. यानी कि हमारे पास जो fossil fuel है अर्थ पर तो है, लेकिन क्या है आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट में है. तो इसको हम जब भी यूज करेंगे तो बहुत ही सावधानी के साथ बहुत सारी बातों को ध्यान में रख कर के ही हम इसको क्या करें, यूज करें. वो इसलिए ताकि हम इसकी जो प्रेजेंस है उसको काफी लंबे टाइम पीरियड तक अर्थ पर इसको बना करके रख सकें. एंड above discussion we conclude that we should use fossil fuel only when absolutely necessary, because first one, it will ensure the availability fossil fuel for a long period of time. Second, it will reduce air pollution and lead to a clean environment. Third one, it will reduce the risk of the global warming. Next and last point, how to save petrol and diesel. The Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advise people how to save petrol and diesel while driving. So first step, drive at a constant and moderate speed as far as possible. Second one, switch off the engine at traffic light or at a place where you have to wait. Third one, ensure correct tire pressure, and last one, ensure regular maintenance of the vehicle.